वेलकम टू वीलर्न में आपका स्वागत है। एंड सब्जेक्ट रिस्क एनालिसिस एंड क्रेडिट मॉडलिंग, सेशन नंबर 8. This is the last session of this subject and topic covered in this session: introduction, enhancement to Basel II, building block of Basel III, element of Basel III's relevant for the bank's treasury or treasurers, implication of Basel III and impact on Indian banks. Then conclusion, all about. Now introduction. The Basel I 1988 capital charge for credit risk, a simple broad brush approach. But it amended in 1996 to incorporate capital charge for market risk. पहले 1988 में बेजल फर्स्ट रूल जो था एक सिंपल था, एक ब्रॉड ब्रश अप्रोच थी, डस्टिंग अप्रोच थी। लेकिन बाद में 1996 में इसको अमेंड किया, इसको चेंज किया और इसमें जो इंक्लूड किया गया वो क्या था? टू इनकॉर्पोरेट कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। इसको मार्केट रिस्क के साथ जोड़ दिया गया, जिसके अंदर दो चीज़ें आईं। पहली चीज़ थी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मेथड और दूसरा मेथड जो था वो इंटरनल मॉडल्स अप्रोच थी, जिसको हम IMA कहते हैं। मार्केट रिस्क कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क, कि जनरल मार्केट रिस्क के अंदर कैपिटल चार्ज क्या होगा? कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक रिस्क लाइक क्रेडिट रिस्क, और जो स्पेसिफिक रिस्क होंगे उनमें कैपिटल चार्ज क्या होगा, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ये सब बेजल फर्स्ट में 1996 में बताया गया। इसके बाद बेजल सेकंड जो है 2004 में आया और इसके अंदर एनहेंस्ड रिस्क कवरेज, इसमें हमने क्या किया? रिस्क कवरेज को एनहेंस कर दिया कि रिस्क कवरेज को किस तरह से बढ़ाया जाए, जिसमें 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं। पहली क्रेडिट या क्रेडिट रिस्क, दूसरी मार्केट रिस्क और तीसरी जो है ऑपरेशनल रिस्क। All these three has already been explained in session 7 before this. So, coverage के बाद में another approach, a menu of approaches like standardized to model based with increasing complexity. And तीसरी बात 3 पिलर अप्रोच को अडॉप्ट किया गया बेजल सेकंड में इन 2004 एंड दैट इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, और ये जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। द बेजल सेकंड ऑफ 2004 कॉपीड एंड पेस्टेड द कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क ऑफ बेजल फर्स्ट amended or amendment of 1996. As a result, the capital charge framework for market risk did not keep pace with new market development and practice. और इससे जो है फ्रेमवर्क तो बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे नहीं हुए। Then capital charge for market risk in trading book calibrated much lower compared to banking book positions on the assumptions that markets are liquid and positions can be bound up or hedged quickly. Capital charge
for a specific risk or credit risk in market risk framework, trading book was lower than capital charge for credit risk in banking book. ये महसूस किया गया कि जो कैपिटल चार्ज होता है वो ट्रेडिंग बुक में कम होता है जबकि बैंकिंग बुक में ज़्यादा होता है. लोअर कैपिटल चार्ज फॉर ट्रेडिंग बुक लेड टू स्कोप फॉर कैपिटल आर्बिट्रेज, और जो ट्रेडिंग बुक के अंदर कम होता है उससे कैपिटल आर्बिट्रेज का स्कोप बढ़ जाता है. कैपिटल चार्ज फॉर काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर डेरिवेटिव पोजीशंस also covered only the default risk and migration risk was not captured. The global financial crisis mostly happened in the area of trading book or off balance sheet derivatives or market risk and inadequate liquidity risk management. ये कारण जो है हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के थे, जिसके अंदर ऑफ बैलेंस शीट डेरिवेटिव्स, मार्केट रिस्क एंड इनएडिक्वेट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इसके कॉजेज थे. बैंक सफर्ड हैवी लॉसेस इन देयर ट्रेडिंग बुक. बैंक डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल टू कवर द लॉसेस, और बैंक के पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो उस लॉस को कवर कर सके. देन देयर वाज हैवी रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, अनसस्टेनेबल मैच्योरिटी मिसमैच, insufficient liquidity assets to raise finance during stress period. Enhancement to Basel II. Post-crisis global initiatives to strengthen the financial regulatory system. In July 2009, enhancement to Basel II, mostly in trading book, जिसके अंदर 3 पिलर थे. और पिलर 1 के अंदर क्या था? पिलर 1 एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, इंक्लूडेड द फॉलोइंग थिंग्स लाइक हायर रिस्क वेट्स फॉर CRE, securitization and other re-securitization exposures almost doubled. Bank not permitted to use any external rating of ABCP program where it had provided liquidity facility or credit enhancement treated as unrated. Number 3, operational criteria for using external rating prescribed. Number 4, CCF for all eligible liquidity facilities made uniform at 50%, irrespective of maturity, earlier 20% CCF for maturity less than 1 year. Pillar 1 again internal model approach. Pillar 1 के अंदर capital based on normal variance and stressed variance, कि कैपिटल जो है इन दो के ऊपर डिपेंड करती है. एक नॉर्मल वेरिएंस होता है तो दूसरा स्ट्रेस वेरिएंस होता है. नंबर 2, इंक्रीमेंटल रिस्क चार्ज IRC फॉर इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट introduced which will capture default as well as migration risk. And now pillar 2. पिलर 2 के अंदर गाइडेंस दी गई हैं, और गाइडेंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, फर्म वाइड गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. नंबर 2, कैप्चरिंग रिस्क ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स एंड सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज. Number 3, managing risk concentrations. Number 4, managing reputation risk and liquidity risk. Number 5, improving valuation practices continuously and implementing sound stress testing practices.
And now pillar 3, appropriate additional disclosure completing enhancement in pillar 1 and 2. पिलर 3 में ये बताया गया है कि एडिशनल डिस्क्लोजर बनाए जाने चाहिए पिलर 1 और 2 को एनहेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए, और उसके लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं या आवश्यक हैं वो इस तरह से थी। जैसे नंबर 1, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स इन ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक के अंदर सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स। नंबर 3, re-securitization exposures. And number 4, pipeline and warehousing risk with regard to securitization exposures. Basel III, December 17, 2009, Basel Committee issued 2 consultative documents. पहला जो था strengthening the resilience of banking sector, and number 2, international framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. The proposals were finalized and published on December 16, 2010. Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking system. Basel III, international framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. ऑब्जेक्टिव ऑफ बेजल 3 कि इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों बेजल 3 आया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूविंग बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स। किसी भी तरह के शॉक्स से को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इम्प्रूव की जाए बैंकिंग सेक्टर के अंदर। नंबर 2, रिड्यूसिंग रिस्क स्पाइल ओवर टू द रियल इकोनॉमी, और रियल इकोनॉमी के अंदर रिस्क को रिड्यूस करने की क्षमता बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आए। सेकेंड पॉइंट, फंडामेंटल रिफॉर्म्स प्रपोज्ड इन द एरिया ऑफ माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन एट इंडिविजुअल बैंक लेवल। नंबर 2, मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन at system wide basis. Building blocks of Basel III, raising quality tier 1 6% of which TCE 4.5%, level 8 plus 2.5% CCB, consistency deduction mostly from TCE, and transparency of capital base. Number 2, improving, enhancing risk coverage on account of counterparty credit risk. Number 3, supplementing risk-based capital requirements with leverage ratio. Number 4, addressing systematic risk and interconnectedness. Number 5, reducing pro-cyclicality and introducing counter-cyclical capital buffers, that is 0 to 2.5%. Number 6, minimum liquidity standards. Improving, enhancing risk coverage on account of counterparty credit risk. In addition to July 2009, Basel II Enhancement as counterparty credit risk replacement cost value is measured either by OEM, CEM, standardized methods और IMM, कि किसी भी मेथड से काउंटर पार्टी रिस्क को मेजर करना है। नेक्स्ट थिंग्स, बैंक्स यूजिंग IMM for measuring exposure for counterparty credit risk in derivative transactions will be required to use stress input in effective expected positive exposure model. Bank using standardized approach or IRB approach
for credit risk and OTC derivatives, must add a capital charge to cover CVA, credit valuation adjustment risk, to capture down gradation of counterparty before default in all approaches. Capital charge for wrong way risk, PD and EAD, are positively correlated in all approaches. Now, assets value correlation of 1.25 for financial firms of $100 billion assets and unregulated financial firms. Strengthening collateral management and extend margining period of risk to 20 days for OTC derivatives. Increasing incentives for use of CCPs, compliance with CPSS, IOSCO norms for ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, यानी जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज से डेरिवेटिव्स किए जाते हैं उनमें इंक्रीजिंग इंसेंटिव्स फॉर यूज ऑफ CCPs करना है हमें. देन सप्लीमेंटिंग रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विद लीवरेज रेशियो. ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है? टू सप्लीमेंट कैपिटल रेशियो इन कैप्चरिंग रिस्क. Number 2, numerator tier 1 capital. Number 3, denominator on and off balance sheet exposure credit equivalent with 100% CCF, except 10% CCF for unconditionally cancelled OBS commitments. Derivatives on CCM and Basel II netting basis, and collateral guarantees or credit risk mitigation will not reduce on balance sheet exposure. Ratio 3% as pillar 2 measures to start with but will be integrated with pillar 1. Leverage ratio will be tracked from January 1st, 2011 to see the result of the above definition, and parallel run from January 1, 2013 to 2017, and final adjustment in 2017, disclosure from January 2015. ये बताया गया है कि जो लीवरेज रेशियो है वो लगातार 2013 से लेकर के 2017 तक चलेगा, और 2015 में ऑफिशियली डिस्क्लोजर बताया जाएगा इसका, एज पिलर 1 रेशियो फ्रॉम January 1, 2018, और फिर पिलर 1 रेशियो January 2018 से स्टार्ट किया जाएगा. एड्रेसिंग सिस्टमेटिक रिस्क एंड इंटरकनेक्टेडनेस. कैपिटल एंड लिक्विडिटी सरचार्ज ऑन SIBs, SIFs, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन और एक्सपोजर ऑन SIB, SIFS, intensive supervision of SIBs and SIFIs, assets value correlation of 1.25 for exposures to large financial institutions and unregulated institutions, stricter treatment of OTC derivatives not cleared through CCPs. Improving loss absorbing capacity of SIBs and SIFIs, contingent capital and bail enabled debt. Orderly unbillings of SIBs, SIFIs, improving resolvability or living wells. International framework for liquidity risk measurement, standard and monitoring. Key characteristics of the financial crisis was inaccurate and ineffective management of liquidity risk. 2 standard ratio proposed: liquidity coverage ratio LCR for short term 30 days liquidity risk management under stress scenario, net stable funding ratio for longer term structural liquidity mismatches, then liquidity coverage ratio LCR, ensuring enough liquid assets to
survive an acute stress scenario lasting for 30 days. Defined as stock of high quality liquid assets oblique net cash outflow over 30 days which is greater than equal to 100%. Stock of high quality liquid assets, cash plus central bank reserves plus high quality sovereign papers also in foreign currency supporting banks operation plus state government, and PSE assets and high rated corporate converted bond at a discount of 15%, and level 2 liquid assets with a cap of 40%. Fundamental characteristics of liquid assets: number 1, low credit and market risk; number 2, ease and certainty of valuation; number 3, low correlation with risky assets; number 4, listed in a developed and recognized exchange. Now market related characteristics क्या होंगे? Active and seizable market, presence of committed market makers, low market concentrations, flight to quality. Net stable funding ratio NSFR to promote medium to long term structural funding of assets and activities, defined as available amount of stable funding, required amount of stable funding greater than 100%. Other monitoring tools for liquidity risk management like contractual maturity mismatch, number 2, concentration of funding, number 3, available unencumbered assets, number 4, LCR by significant currency, and number 5, market related monitoring tools. Implication of Basel III, impact on economy. IIF study, loss of output of 3% in G3, US, Euro area and Japan on full implementation during 2011 to 15. Basel Committee study, likely to have modest impact of 0.2% on GDP for each year for 4 years for 1% increase in TCE. Similarly, for 25% increase in liquid assets, half the impact of 1% increase in TCE. However, long-term gain will be immense. Global Bank could have a gap of liquid assets of £1730 billion to be met in 4 years. Global Big Bank could have a capital shortfall of £577 billion to meet 7% common equity norm to be met in 8 years. Tier 1 capital ratio falls to 5.7% from 11.1% under the new definition or adjustment of capital and increase in risk coverage RWH. Therefore, long phase in arrangement annexure 1 phase in arrangement 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and then 18. Leverage ratio, minimum common equity capital ratio in 2013 3.5%, 14 4%, 15 4.5%, 16 4.5%, 17 4.5% and 18 4.5% as on 1st January 2019 4.5%. Capital conservation buffers 0.625% in 2016, 1.25% in 17, 1.875% in 18 and 2.50% in 19. Minimum common quality plus capital conservation buffers 3.5% on 2013, 4% on 2014, 4.5% on 15, 5.125% in 16, 5.75% on 2017 and 6.375% 2018 and 7% on 19. Phase in of deduction from TCT1
including amount exceeding the limit for DTAs, MRS and financial, 20% on 2014, 40% on 15, 60% on 16, 80% on 2017 and 100% on 18 and 19. Minimum Tier 1 capital 4.5% 2013, 5.5% 14, 6% 2015, 6% 16, 6% 17 and 18 and 19. Minimum total capital 8% on 2013, 8% 14, 8% 15, 8% 16, 8% 17, 8% 18 and 19 respectively. Minimum total capital plus conservation buffers 8% of 3 consecutive years from 2013 to 2015, then 8.625% in 2016, then 9.25% in 2017, then 9.875% in 2018 and 10.5% in 2019. Capital instrument that no longer qualify as non-core Tier 1 capital or Tier 2 capital phased out over 10-year horizon beginning from 2013. Liquidity coverage ratio observation period begins. Introduction minimum standard. Net stable funding ratio observation period begins and introduce minimum standard. And now impact of Indian Bank. High capital ratio at 14.4% in June 2010, which will fall to 11.7%. Tier 1 will fall from 10% to 9% and common equity from 8.5% to 7.4%. Most of deductions are already mandated by RBI, so little impact. Most of our banks are not trading banks, so not much increase in enhanced risk coverage for counterparty credit risk. Banks mostly follow a retail business model and do not depend on wholesale funds. Whether our SLR securities can be part of the liquid assets, whether our liquid assets will extend the security of fundamental characteristics and market related characteristics. Indian banks are generally not as highly leveraged as their global counterparts, so the large leverage ratio of Indian banks would be comfortable. Banks having a huge tradition or trading books and off-balance sheet derivative exposures may be impacted due to increased risk coverage capital on account of counterparty credit risk. Similarly, bank having huge off-balance sheet exposure, derivatives and others may be impacted on account of leverage ratio. Bank depending heavily on wholesale funds may be impacted due to the new liquidity standard. SIVs may have further implications for capital and liquidity surcharges and activity restrictions. Whether our bank can attract capital in the form of contingent capital and bail-in-able debt at the point of non-viability, or whether our capital market will support such instrument. Now conclusion of all over Basels. Basel Committee is undertaking a fundamental review of the trading book, whether a particular position to be covered in trading book or banking book and capital requirements. Not only sluggish growth, high unemployment and low returns, but also more resolution will be the new normal. And now questions, do it yourself. Question number 1, explain the enhancement of Basel II. And question number 2, what do you mean by addressing systematic risk and interconnectedness? And that's it from session number 8. Thank you.